Respected Chief Guest of the event, Shri Kailash Pagariji, IAS Commissioner, Integrated Child Development Services Scheme, Commissionerate, Government of Maharashtra. Our special guest, Srimati Manjari Madhusudan Manolkar, IAS Managing Director, Maharashtra State Farming Corporation, Pune. Shri Nitin Daveji, CEO Questcorp, and very soon Shri NN Vadode, Deputy Director of Training, Board of Apprenticeship Training, Western Region, is just about to join us. A very warm welcome. Good morning, Namaskar. On behalf of Medhavi Skills University, I welcome everyone to this Skills and Staffing Leadership Conclave. First of all, thank you sir, thank you ma'am, and everyone, all our esteemed guests, leaders from the staffing industry who have found time to grace this occasion. Your presence here clearly testifies that we as a key stakeholder are really excited about the possibility which India has right now, the power of youth. We are in the business of manpower, and we as Medhavi do everything which is related to youth. So I think today it's a very important occasion to reflect together what we have achieved in the last few years, how our key partners have enabled the work we do with industries, and also it's an opportunity for the Medhavi group to really showcase that how we are creating that excellence in industry-led higher education as a sector. We all know that India demography is absolutely an opportunity to create a difference. It's a dividend for the nation. आज हमारे 50 करोड़ आबादी 30 साल से कम उम्र की है. If we look at school students who are coming out of the school education system, हर 4 में से एक बच्चे को ही हायर एजुकेशन का मौका मिल पाता है to enroll into school, enroll into higher education. Forget about they graduating from higher education. वो नंबर और भी कम होगा. We all know कि almost 95% of our youth, the workforce, which is getting into the mainstream, who are starting in the shop floors, the factories, the retail outlets, farms, उनको कोई formal skilling नहीं मिली, are still vocational education, skill-based education is a very small percentage of interventions which are happening into our overall skill and education infrastructure and framework the country has. And that's where the real opportunity lies. I talk to a lot of CHROs, and I'm sure we all as staffing leaders, we all know that what is the pain point. The pain point is the industries are not getting trained manpower, skilled manpower. Attrition is a very big problem. Making them deployable from day one is something which all CHROs and L&D heads right now sit and work that what is the solution. And how do we make sure that they also grow in the system, and that is a big challenge for them. And from a university perspective,
from an education entity perspective, that is where we saw an opportunity. Almost 13 years back, me and my co-founder Kuldeep, we thought that next couple of decades is for India. Let's do something for the people, the youth. Let's create a platform which can provide very meaningful, no-nonsense skills and education for the youth, and especially the marginalized youth. ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन सोच ही नहीं पाते, जिनको अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए काम पे जल्दी लगना पड़ता है, तो how can we empower them with right education and skills was the key vision with which 13 years back we started. And today, Medhavi is not just a company, it's an ecosystem. And I'm very proud to say that in just last 4 years of Medhavi Skills University, we have proudly, we can say that we are now India's #1 skills university, which pioneers the skill integrated, industry integrated higher education model in the country. A lot of people ask me that what is the inspiration, and I think for most of the people I am meeting for the first time, although my team keeps on interacting with all of you, the core inspiration lies between what education we experienced at our time. I studied from IIT Kharagpur, did my BTech, MTech. Very passionate about electronics as a sector. मैं स्कूल टाइम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ कुछ करता रहता था. I picked up electronics engineering. But frankly, in the 4 years of my journey at IIT, I only got that 2 months window, formal internship window to really go and experience what work happens in the industry. And that was a real eye-opener for me. I come from a second generation entrepreneur family, so picking up immediate job was not my immediate concern, but I wanted to do something and study something which is very meaningful. हमारे knowledge, हमारी study का क्या relevance है, क्या application है, वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता था. Although very good faculties, very good facilities, but still I found that even at the topmost institutions in the country, we are not able to provide that awareness that how this knowledge can be applied in the industry. And later we figured out that the only way is industry-led higher education. And that was the vision me and my co-founder created, that we will create a skills university where the focus would only be working with the industries. We will make industries as our stakeholders. We'll create courses with them. We'll understand what skill competencies are required to perform on the job. उनको कैसे लोग चाहिए, कैसा मैन पावर चाहिए, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, उनके इंटरनल लोगों को क्या अपस्किलिंग चाहिए, कैसे लोगों को ग्रो कराना है, और एजुकेशन को स्किल से कैसे जोड़ना है. दैट वाज आवर कोर फोकस. एंड थैंकफुली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 वाज अनाउंस्ड. हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल मोदी जी का कोर विजन यही था कि स्किल्स को एजुकेशन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है. हमारे एजुकेशन स्टिल लैकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की इंडस्ट्री में क्या चाहिए. वोकेशन को एजुकेशन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है. और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 का कोर आधार, द कोर पिलर इज हाउ डू यू इंटीग्रेट वोकेशनल एंड स्किल्स विद हायर एजुकेशन. उस पर फ्रेमवर्क्स बनी. एंड वी आर वेरी लकी, हम डिस्कस करते रहते हैं कि जब हमने स्किल यूनिवर्सिटी की नींव रखी तो उसी समय एनईपी का फुल फ्लेजेड इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था. न्यू रेगुलेशंस वे कमिंग इन प्लेस. हाउ डू यू इंटीग्रेट ऑन द जॉब लर्निंग एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम वाज द की discussion topics inside the boardrooms of UGC, AICT, NCVT. And thankfully we were invited to contribute in those new guidelines which were developed because of what work we were doing in the skills ecosystem. Or I am very proud that the regulators, the government of India realized this problem कि आज सिर्फ वो 5% बच्चे जो एक बहुत हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन अफोर्ड करते हैं, महंगी एजुकेशन अफोर्ड करते हैं,
भारत देश वो नहीं है। आर इंडिया इज अबाउट द 95% यूथ जो काम इमीडिएट करना चाहता है, स्कूल से निकल के इमीडिएट करना चाहता है, जिसको अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है। हम उनको एम्पावर कैसे करें, हम उनको कैसे मौका दें कि हायर एजुकेशन वो कर सकें, ताकि उनको वो कमा भी सकें, फैमिली को सपोर्ट भी कर सकें, ग्रो भी कर सकें, और उनका जो एस्पिरेशन है उनको हम टैकल कर सकें। आज जैसे हमारा देश प्रगति की तरफ गया, बट ये परसेप्शन है कि जब तक एक यूनिवर्सिटी की डिग्री ना हो हम किसी बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं बोलते। आज चाहे वो कितना ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो, कितना ही अच्छा फिटर हो, वेल्डर हो, बट डिग्री होना जरूरी है, तभी हम उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं। वोकेशन एंड स्किल्स कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नहीं चाह रहे। आज हमने स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को ट्रेन करके कंपनियों में नौकरियां लगाते थे, तो वापस छोड़ के वापस आ जाते थे कि नहीं, मुझे अपने गांव में किसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री कर लें, कंप्लीट कर लें। क्यों? क्योंकि घर वालों ने बोला है। तो हमने बोला कि क्यों ना इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जाए। आज हम उनको वोकेशन भी देंगे, स्किल्स भी देंगे, हायर एजुकेशन भी देंगे, और इंडस्ट्री के साथ मिलकर देंगे। एंड वी आर वेरी प्राउड दैट टुडे एज वी स्टैंड we have fully mastered the model of industry-led higher education, learn and earn model, skill-based higher education. And we are very proud that the frameworks which Medhavi Skills University has created is now becoming an example, case study. We are submitting white papers to UGC that how through this model a real change can happen, how we can empower the people who otherwise cannot afford higher education. वो higher education afford नहीं कर सकते, उनको कैसे हम empower कर सकते हैं। Today I'm very proud that with our 40 plus staffing partners, we are impacting about 20,000 students who are enrolled into our BWOC, DWOC, ITI programs across the country. हमने नहीं सोचा था कि स्टाफिंग पार्टनर्स हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो पाएंगे जब हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी, फ्रैंकली। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ दैट स्टाफिंग पार्टनर्स, मैन पावर लीडर्स आर द एंटिटीज विच एग्जैक्टली नो व्हाट इज द पेन पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री। उनको कैसे लोग चाहिए, कब चाहिए, किस स्किल सेट के चाहिए, और धीरे धीरे हमारी पार्टनरशिप बढ़ती चली गई। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट टुडे आई थिंक मोर देन 40 plus organizations are sitting here and their leaders are sitting here where we are celebrating this journey. And I would say this learn and earn model, it was not easy. Frankly, as a higher education entity, skills university, इंडस्ट्रीज के साथ हमने काम स्टार्ट किया। बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज हमें मिली जहाँ पर फोकस वाज मैन पावर एंड दे वर्क 10 to 12 hours every day. But higher education, we also need to teach. And making students attend offline classes, online classes after hard work, 10-12 घंटे के काम ड्यूटी शिफ्ट करने के बाद उनको कोई भी 1 घंटे भी बैठा के उनको फोकस कराना was very difficult. तो लेकिन हम अपने मॉडल को इनोवेट करते चले गए। हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे रीजनल लैंग्वेजेस कंटेंट, आज हमारे पास 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे LMS कंटेंट बुक्स बनी हुई हैं। हमारे फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम्स, हमारा नॉन रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ टेकिंग एनरोलमेंट ऑन अ रोलिंग बेसिस कि जैसे जैसे बैचेस बनते जा रही हैं इंडस्ट्री में, हाउ कैन वी क्रिएट बैचेस, और उसके बाद रियली रिवॉर्डिंग अ स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं। आज हमारी टीम, आई एम वेरी प्राउड दैट माई टीम ऑल्सो टुक इट एज अ चैलेंज कि अगर शुरुआत में अगर सिर्फ 20-30% बच्चे एक्टिव हैं जो हमारे वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में हैं, उसको 70-80% तक हम कैसे लेके जाएं। जब पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और जब हमारी टीम जाके वहाँ पे उनको फिजिकल मार्कशीट अवार्ड करने लगी इनसाइड द इंडस्ट्री, तब मैंने वो चेंज देखा कि उस बच्चे में उस स्पार्क आ गया कि नहीं, जो
असंभव लग रहा था कि ये तो काम करने आया है इंडस्ट्री में, लेकिन आज इंडस्ट्री, स्टाफिंग पार्टनर एंड यूनिवर्सिटी आज खड़ी है कि उनके ज़ीरो कॉस्ट पे स्टिल उनके पास एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो आज अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और उनको एक रेगुलर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिले या डिप्लोमा मिले। ये उस फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमने देखा कि वो चेंज आने लग गया है, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट दैट परसेंटेज is increasing day by day, and our lot of partners will really second that. So इस अपॉर्चुनिटी को, इस थीम को हमने और बढ़ाया. Now I'm very proud that in not only in our 250 people team in Sikkim, but we have more than 100 plus people team sitting in our Gurgaon and Kolkata office, जो फोकस्ड इसी चीज़ पे है कि कैसे इंडस्ट्रीज के लिए नए प्रोग्राम्स बनाने हैं. नाउ वी हैव 200 प्लस डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स विच आर रेडी फ्रॉम सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स टू एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग टू म्यूजिक टेक्नोलॉजी टू ग्राफिक डिज़ाइन. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमने कोर्सेज बनाए हैं. आज NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के साथ हम अवॉर्डिंग बॉडी के तहत we have created 500 plus short-term courses, NSQF aligned and NHEQF, National Skills Qualification aligned qualifications हम बना रहे हैं. और मैं आप सभी को बता दूं कि इंडिया में 1300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, स्किल्स यूनिवर्सिटीज़, जिनको NCVET से एज एन अवॉर्डिंग बॉडी का मान्यता प्राप्त है. सो आई फील वेरी प्राउड what work we do at our awarding body division. और जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए इंडस्ट्रीज को समझने में, we realize that there is a huge scope in also empowering people who are already working for quite a longer period in the industries. आज 10th पास, 12th पास बच्चे या 8th पास बच्चे भी बहुत हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं. क्या उन्होंने कोई स्किल नहीं सीखा? काम करते करते सीखा है. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में ये पावर्स हैं कि उनके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को भी हम थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग असेस करके वी कैन गिव देम एकेडमिक क्रेडिट्स एंड गिव देम इक्विवेलेंस ऑफ 10th, 12th और इवन रिड्यूस द टाइम दे टेक टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन. Those such flexibilities are there, and my team will tell you after me that we have those frameworks ready, that if you bring your clients with requirements where there is an upskilling requirement, we need to create customized postgraduate track. कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ हमने MBA in लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया, जिसमें 50-60% करिकुलम उस लॉजिस्टिक्स कंपनी ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है कि वो जो सिखाना चाहते हैं बच्चों को वो हमने MBA करिकुलम में डाला. ऐसे इनोवेशंस हम कर रहे हैं. आज जो इंडस्ट्री में, जैसा मैं बता रहा था कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं, कुछ लोग हैं, जैसे कुछ लोग काम करते हैं, दे आर डिलीवरी बॉयज़ या ड्राइवर्स हैं, उनको भी अगर NCVT रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन चाहिए तो वी हैव ऑल द पावर्स टू क्रिएट दोज यूनिक प्रोग्राम्स, कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स, असेस देम एंड सर्टिफाई देम. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे वी हैव श्री बदुदे साहब, very warm welcome, Deputy Director of Training, Board of Apprenticeship Training, Western Region. And I am very happy to also announce that formally we are signing an MOU today with BOAT Western Region to exactly implement this core theme, that even apprenticeships is actually a learning which university will recognize and give academic credits. We are launching apprenticeship embedded degree program where not only a graduate student, which usually gets a NATS benefit when they are enrolled under the NATS scheme, but even the final year students of BWOC programs and diploma programs, BWOC programs will also, after this MOU, will be able to get the benefit of NATS scheme and will embed that into our BWOC and diploma programs of the university. So thank you, sir. And this is absolutely in line with what
the National Credit Framework and the new National Education Policy says that every learning can be creditized, even what learning we experience as students when we work on the job, on machines. Let me tell you that not only with स्टाफिंग पार्टनर्स, हमने कुछ खुद से भी इंडस्ट्रीज के साथ एक्सपीरियंस किए और मैं उन एग्जाम्पल्स को बहुत क्लोजली देखा है मैंने कि ये लर्न एंड अर्न मॉडल का क्या पावर है। 3 साल पहले हमने होटल इंडस्ट्री के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हमारे मैरियट एंड टाउन प्लाजा हॉलीडे इन जो काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटैलिटी चेन्स हैं उनके साथ टाइप किया। BSc इन हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट ट्रैक में बच्चों को डे 1 से हमने इंडस्ट्री में डाला। उन्हीं को बोला कि एक क्लासरूम आप हमें दीजिए जहाँ पर हमारी फैकल्टीज मॉर्निंग में 2 घंटे क्लास लेती है एवरी डे एंड बाकी 7 to 8 आवर्स दे वर्क ऑन द जॉब। हमने पूरा कस्टमाइज 3 साल का ट्रैक बनाया कि 3 साल में कैसे कैसे होटल उनको अलग अलग टाइप के काम सिखाएगा, चाहे वो किचन का हो, फ्रंट ऑफिस का हो, बैक ऑफिस का हो, स्टीवर्ड हो, एंड उसको करिकुलम का पार्ट बनाया which was about 60% of the curriculum. And आज they are about to graduate and when I recently was speaking to the general manager of those hotels, they told me that it has turned out to be one of the most successful manpower related initiative they have taken. मेधावी के बच्चे आज IHM के ग्रेजुएट बच्चे जो आ रहे हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। That was their statement and that was a very big validation that learn and earn model can work. It was a validation। वो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो अगर हम उनको learn and earn मॉडल में नहीं डालते तो आज कभी वो हायर एजुकेशन सोच भी नहीं पाते। वो कोई अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेकर का काम कर रहे होते और उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता। मोस्टली बच्चों के साथ यही है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो बच्चे उन्होंने स्किल सीखी, प्रैक्टिकल स्किल सीखी जो कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने कैंपस में वो लेवल का एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे सकती। हमारे फैकल्टीज ने उनको वेरी एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्टिव ट्रेनिंग दिया और नाउ दे विल हैव अ वेरी एक्सेलरेटेड करियर्स। दे हैव बिकम द स्टार्स, द फेवरेट्स ऑफ द सुपरवाइजर्स ऑफ दोज होटल। सो ओवरऑल मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द स्टाफिंग पार्टनर्स सिटिंग हियर कि what work we are doing with you is just a start. Consider us as your core education and training partners for any of your client requirements, चाहे वो entry level manpower की हो, उनकी skilling की हो, चाहे recruit, train and deploy हो, कैसे उस इंडस्ट्री के लिए हमें कस्टमाइज टेलर मेड एजुकेशन प्रोग्राम बनाना हो, चाहे वो 15 दिन का प्रोग्राम हो, चाहे वो 6 महीने की सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, NSQF अलाइन प्रोग्राम्स हो, NHEQF यूनिवर्सिटी अलाइन प्रोग्राम्स हो, UG सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, DWork हो, बैचलर इन वोकेशन प्रोग्राम्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो। The Skills University, Medhavi Skills University is fully equipped to create those pathways, those programs and award NCVT recognized, Government of India recognized skill certifications or UGC recognized degree and diploma programs when we implement this with your industry partners. And my team will also tell you the new initiatives we have taken on certifications and creating upskilling tracks for our internal workforce. So overall इस मिशन में मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप सब मेधावी के साथ मिलके इसको और बड़े स्केल पे पूरे इंडिया में हम इम्प्लीमेंट करें तो इंडस्ट्री लेड स्किल बेस्ड एजुकेशन। बिकॉज मुझे लगता है कि स्टाफिंग पार्टनर्स वी बीन लकी टू रियली फाइंड दिस मॉडल कि हम स्टाफिंग पार्टनर्स के साथ इतना ब्यूटीफुल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स क्रिएट द इंडिया वर्कफोर्स दैट इंडिया डिजर्व्स। And my invitation is that next meet we will do in our Sikkim campus. आप सभी को invitation है कि आप लोग सिक्किम आइए, experience the quality labs, quality work models we are doing, and I promise that next time मैं आप लोगों को सिक्किम में अपने campus में post करूँगा। Thank you so much, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।